So we discussed the difficulties of Astanga. So we discussed so far is how much the following this yoga is very difficult. We discussed like let's see briefly one on this. So how one should find a secluded place. The yoga cannot be practiced in the city. One has to go to forest. So then one has to go to forest. One has to sit on the kusa grass, deer skin. We discussed why we should use deer skin. And then one has to sit erect, not weak for them. They should sit straight, and then they should not close the eye fully also, and should not open also fully. It should be off closed, and they should see at the tip of the nose. So do all these things, and then they should meditate on God. So it is given body should be erect, body, neck, head, everything should be in straight line. So by practicing this yoga, they control their mind. So we discussed until this verse, 6.50. From 6.16 we will see today. Nati ashrastastu yoga asti. You can recite. Nati ashrastastu yoga asti. Nachaikantam manashnataha. Nachati swapnasilashya. Jagrato naiva charjuna. There is no possibility of once becoming a yogi. Oh Arjuna, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or doesn't sleep enough. So one should not eat more also, less also. Should not sleep more also, less also. If someone does that, he cannot become a yogi. So if someone eats too much, he becomes so much fatty. So then he will become always, it will be his own body himself become heavy for him. Can you come little front? Somewhere come. So one should not become so much fat. One should eat how much is required for this body. So according to Ayurveda, it is said 50% of stomach one has to eat. 25% of stomach, water should be there. Another 25% is air. So this is the proper level of eating. But we eat more than 100%. गलत तक हो जाते फिर पानी फिर हवा. So where it will go? So then it will be difficult for us also. थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाएगा मतलब we cannot carry our own body. So in this case sitting will be difficult. Standing आप देखा रहेगा ना बहुत मोटा है. बैठने के लिए बैठ गया मतलब उठने के लिए मुश्किल है. So one should not eat that much. Whatever is required to keep the body fit that much. So if someone eats very less, वे बहुत उपवास करते हैं, बहुत सारा उपवास ये वो करते हैं, ज़्यादा ऐसा लीन भी होना नहीं चाहिए. फिर हमको क्या होता है, we don't get sufficient energy also. We cannot. If someone doesn't eat, it will be difficult to meditate. Actually, yogis they doesn't eat because they know the tactics how to control the hunger. They control the hunger for many days, many months, year also by controlling that three dosas, kapha, vata, pitta. These three dosas is there. So they don't eat. They don't need to eat only. But for us, how much is required that much. So one may feel that if I don't eat meat, I will become weak. So generally, this is the idea outside. They think that no, you see, cow eats what? Bull. Bull eats grass, which is very heavy. For plowing field, which one will use? Bull only, right? अभी ट्रैक्टर है, पहले बुल था. So bull बहुत इतना हट्टा कट्टा है. Even elephant, what it is elephant? Doesn't eat meat. So there is sufficient energy is given. God has made the body different type of body and different types of food is given. But people they think that only animals. Of course, nowadays what happened? All the vegetarian food they have started putting so many chemicals. So one is not getting sufficient
energy. But so even medicine also nowadays you see meat only will be there. So vitamin tablet all you see, they can the meats only will be there. But still some items, some kind of foods are there, which is good for health. So we have this dhania bolte na navadhanya. So that's all very good for health. For that medicine is not required. So but if someone eats meat, what will happen? वो मांस खाते ना उनको तमोगुण में चले जाते हैं। तमोगुण मालूम है? ज्यादा गुस्सा करते हैं जी। हाँ, तो ज्यादा गुस्सा करते हैं उनको वो रजोगुण। तमोगुण मतलब I will give you three types of living entity. Example: cow, tiger, and donkey. और cow, tiger और camel ऐसा भी रख सकते हैं। नहीं, polar bear. Cow, tiger, polar bear. So cow is in the mode of goodness. Cow can relate with human being. It doesn't do any harm to human being. So that is goodness. सत्वगुण। अब सत्वगुण मनुष्य में देखेंगे लोग अच्छा बात करते, मीठा मीठा बात करते, किसी से गुस्सा नहीं होते। तो काले स्टूडेंट मतलब फर्स्ट बेंचर्स, अच्छा पढ़ाई करते, किसी से झगड़ा के लिए नहीं जाते, बंक नहीं करते क्लास में, टाइम पे होमवर्क देते। अच्छा, सो दे आर लाइक गुडनेस। रजोगुण मतलब टाइगर। तो टाइगर इज ऑलवेज इट हंट्स एंड ईट, रन्स एंड हंट्स, ईट ड्रिंक्स ब्लड। तो वो रजोगुण है। अभी ह्यूमन मतलब हमेशा गुस्सा में रहते हैं ना, कोई कुछ पूछेगा थोड़ा बोल देंगे फिर गुस्सा आ जाते हैं। रजोगुण में कब झगड़ा करेंगे वो रेडी रहते हैं, कब हम लड़ाई कर सकते हैं। सो दैट इज रजोगुण। तमोगुण विच है पोलार बियर। पोलार बियर कितने महीने सोते? सिर्फ 6 महीने ही सोते, ज्यादा नहीं। साल में 6 महीने सोते, 6 महीने जागते। सो इट इज सो मच इग्नोरेंस, सो मच स्लीपिंग। तो तमोगुण वाले मनुष्य में देखेंगे हमेशा ऐसा टायर्ड में ही रहते, कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते किसी में भी, कुछ बोलेंगे भी कहते नहीं ठीक से, 10 बार बोलना पड़ता है देन दे मीट टू प्रॉब्लम। सो बिकॉज देयर माइंड डजंट मच एक्टिव। सो पैशनेट पीपल माइंड इज टू मच एक्टिव। कुछ तो करना है उनको, नहीं उनको पागल हो जाएगी। उनको कुछ करने के लिए देना है, उनको शांति बैठेंगे नहीं। तो कैसे बच्चे, छोटे बच्चे इधर भागते उधर भागते, पकड़ के बिठाएंगे भी वो फिर इधर उधर भागते रहते हैं। सो दैट पैटर्न इज देयर। Goodness means balance. They are not too much aggressive or too much like ignorant person doesn't do anything also. They are balanced. So goodness is the question. So one who eats meat, they will go into ignorance mode. ज्यादा मांस खाएंगे उनका दिमाग भी इतना जल्दी काम नहीं करता है, और वो असुर गुण नहीं आते। गुण हमारे अंदर से आते हैं, वो असुर गुण आते हैं। किसी से कैसे हम, हाउ वी कैन चीट अदर, हाउ वी कैन लूट अदर। So this type of tendency will come by eating meat. On top of it, sinful activity it is. Meat eating is sinful activity. Unless one is sinful, he cannot understand spiritual. अभी अध्यात्म को समझने के लिए हम पाप से बाहर आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट बंद करना चाहिए पाप करने। अभी तक पाप कर दिया इतना, हमको पता ही नहीं, हमको ज्ञान ही नहीं था, बट अभी थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है। So even Ayurveda recommends vegetarian only. So human beings, this human life, the human can digest only vegetarian food. So we saw this herbivores, carnivores, and omnivores. Herbivores means what kind of living entity you can say? Eat grass. Carnivores, meat. Herbivores means cow. Carnivores means tiger, lion. Omnivores means huh? Grass and meat. Human being. Vegetarian also will eat, non-vegetarian also will eat. So, but according to our body, you see, human vegetarian only can digest. Our what do you call intestine, you see, ऐसा वो कुछ तो इतना लंबा मीटर रहते हैं, वो आते आते हटक गए ना, फिर हमको कॉन्स्टिपेशन हो जाते, बर्फ आते, गैस हो जाते, बिकॉज इट डजंट मूव प्रॉपरली। बट एनिमल डजंट हैव लाइक दिस इंटेस्टाइन, स्ट्राइट इंटेस्टाइन इज देयर। इट कैन ईट ऑन वन साइड डायरेक्टली, इट कैन सेंड इट आउट। हमको वैसा नहीं। और उसका गैस्ट्रिक जूस रहते ना, फायर, हम बोलते ना अंदर हमको आग है, पेट जल रहा है बोलते ना, क्यों हम बोलते पेट जल रहा है, आग है अंदर, इसलिए ना हमको फीवर समय गर्म रहते बॉडी। दिस ऑल आयुर्वेदिक, नॉट allopathic. Allopathic they don't know heat, how the heat is generated in body, but Ayurveda says because of there is heat in body, that fire is there. So animal's fire is too high. You see snake, its fire is too high, it can just swallow animal and it can digest. So
According to human body is herbivorous only. It can easily digest. That too, we cannot digest directly. We cannot eat grass directly. We have to cook and eat. इवन नॉन वेजिटेरियन चाहिए कार्निवोरस एनिमल्स विल ईट कुक एंड ईट वो डायरेक्ट खाते हैं उसको पच जाते हैं हमको कुक नहीं होएगा पचेगा नहीं अरे पक्का ही नहीं बोलते ना तो खाएंगे कैसे पचेगा तो इवन एनिमल्स कैन डायरेक्टली हंट उसको कुछ चाकू को कुछ जरूरत नहीं द टीथ इज इटसेल्फ गिवन केनाइन टीथ बोलते हैं उसको हमको भी चार रहते इट इज गिवन एज ए blessing because some human beings they want to eat. That's why as a credit it is given. They can use it if required. But tiger, lion are using almost canine teeth only with that. In such a way they can rip the skin and eat. So this science is there. So this is about eating, what one has to eat. Then about sleeping. So Prabhupada says if someone sleeps more, he will become lazy. Someone sleep less, क्या लिखे विल बिकम क्रेजी पागल हो जाते सोएंगे नहीं कोई कुछ बोलेंगे गुस्सा आते हैं और दिमाग भी ठीक से काम नहीं करते एक दिन हम सोएंगे नहीं सो बट गुड अमाउंट स्लीप इज मींस ओनली 6 hours is sufficient with next verse we will see so this very important verse yuktahara viharasya युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य योगः भवति दुःखः. He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation, and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. So one who is regulating, balancing, eating, sleeping, recreation, and work, उनको कुछ दुख ही नहीं उनको लाइफ में. What is the relation between eating and problem? ज्यादा खाने में हमको कुछ लगता है ना, but why it is given here? आप कभी भी ज्यादा किया क्या प्रॉब्लम होता है खाने के बाद? एसिडिटी, इंडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है. तो इससे क्या होता है, दिमाग भी काम नहीं करते. यू फील वेरी डल. एक दिन पेट साफ नहीं होएगा भी देखो आपको दिमाग काम नहीं करता. तो उसका जो भी हमको एनर्जी जाते हैं इंडिकेशन brain and our mind, our body, that indication that connection will not happen. That body, the stomach is not clean. So one has to eat how much it is required and whatever we can digest. Then sleeping, already we discussed. So best is, there is problem also. If somebody eats vegetarian also, why is eating non-vegetarian sinful? Killing, very good. But vegetarian also killing is there or not? Does plants has life? Yes. So that is also not killing or not? Yes. So why it is then recommended? हाँ, भगवान को भोग चढ़ाते हम क्लास के बाद लेते हैं उसको प्रसाद हम बोलते. ऐसा नहीं राइस दाल ऐसा बोलते, प्रसाद बोलते. मतलब सर वो तो एक विधान है जो पहले से भगवान ने बनाया, उसकी ये चीजें खा सकते हैं जो हाँ. वेजिटेरियन है. वो सही है, गलती नहीं बोल रहा हूँ, बट वेजिटेरियन को भी लाइफ है. अभी देखेंगे आपको ये बाल को कट करेंगे दुखता नहीं, बट खींचेंगे दुखता है. Because there is life, but the pain is very less. So similarly, plants also has life, but it doesn't get that much pain. Whenever you pull some apple, the plant also get pain. But how it's we should eat also that, but how we should not get sin is by offering that to Lord. उसको प्रसाद बोलते हैं, भोग लगाते हैं ना भगवान को. अभी देखो 12 बजे 7:30 8 बजे बंद होता है, बंद के बाद भगवान के लिए खिलाते हैं. तो वो जो खाते जो भी आते हैं उसको सबको बांटते हैं. तो वो प्रसाद, वो खाने में हमको जो पाप किया वो भी चले जाते. वो 3rd chapter भगवद गीता कृष्णा says that यज्ञशिष्टाश्रम संतो गुंजेते सर्व किल्बिषं गुंजेता तपम पापु या पच्छान्ति आत्मकारण. जो भी पाप किया प्रसाद खाने से वो भी चले जाते. तो प्रसाद को इतना महत्व है. सो स्लीपिंग इज, आपने कुछ पूछ रहे थे? तो प्लांट को कट करते हैं तो वो हमारा ही होता है. मतलब जैसे आम का झाड़ है वो पूरा ये होता है, ग्रो होता है, फिर आखिरी जब वो मरने आता है ना तो फ्रूट पक्के हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद वो हम देखते हैं. Anyhow, plants. He is trying to say plants is not going to eat that fruit.
So Lord has made in such a way that we are going to, the fruit is for us. देखो इतना अच्छा नहीं बनाया, भगवान फल दिया हमको, हम केला है, अभी केला हम खाते, वो छिलका को गाय को दे देते। अभी आम है, आम भी हम खाते, बीज को फेंक देंगे, उसका और एक आम पेड़ आ जाए। There is no wastage, very proper management is. So 6 hours sleep is sufficient according to Ayurveda. If they are small child, 7 hours. So 6 hours sleep मतलब वो disturb नहीं होना चाहिए. Sleep also there are 3 types we given here: Jagrata, Swapna, and Susupti. Jagrata means vacant state. Now we are in Jagrata. Then Swapna, किसी को नींद में ज्यादा ड्रीम्स आ रहे मतलब उनको नींद ठीक नहीं. So that sleep is very less sleep. So वो sleep कम है. बस सुसुप्ति मतलब उनको कुछ समझता ही नहीं. आप रात सोते समय आंख बंद करते, फिर सुबह कब उठ रहे, वो बेस्ट स्लीप. क्या हुआ कुछ समझता नहीं. So that उसको सुसुप्ति बोलते हैं. So if someone sleeps like this for 6 hours, that is sufficient for body, according to Ayurveda. So basically time also given. 9 o'clock one has to sleep. 3 o'clock one can get up 6 hours. If someone follow this, he can do so many things. उनको इतना समय मिलता है मान के. 3, 4 if someone gets up also, so many things he can do. Someone wants to do yoga or exercise, he can do so many activities early morning. Whatever you want to, like students, they can study. Businessmen, some complicated things are they can solve in the morning time. Because मन बहुत शांति रहते हैं उसमें. जैसे जॉब वाले हैं उनका कैसा भी आने में लेट हो जाता है, कभी 8 बजे 9 बजे, फिर आप खाना खाओ, खाते खाते 10 साढ़े 10 11 बज जाता है। Of course, I agree that, but we have to balance. In those days, ऐसा कुछ जॉब नहीं था. लोगों के पास खेत था, तो 6 बजे के बाद उनको काम बंद हो जाते, तो तुरंत खाते उनको हो जाते. बट अभी का मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा बन गया. नाइट शिफ्ट भी कहते, वो क्या बोलेंगे आप? आपको ठीक है एटलीस्ट 9 बजे 10 बजे आ जाते, रात उनको चालू होता है काम 9 बजे. तो बट हेल्थ इश्यू इतना होते मालूम क्या, वो 9 से 3 ना सारा चीज बॉडी को भी ये 3 गुण नहीं. सुबह सुबह सत्तो गुण में रहते बॉडी, 12 बजे के बाद रजोगुण में आते. सो 12 से 6 घंटे तक, उसके बाद तमोगुण, सोने का टाइम. तो वैसा वो 3 गुण आप सब जगह में देख सकते हैं. ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड म्यूजिक ऑल्सो. उस म्यूजिक सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है. अभी कुछ पब में जाएंगे, कैसा म्यूजिक रहते हैं, जब हाथ पूरा ऐसा था, पूरा हिलता है तो हाथ रहेगा ऐसा. लोग नाचते भी देंगे, कुछ तो फिट्स आ गया कैसा रहते हैं, वैसा नाचने लगता है. सो तमोगुण म्यूजिक वो ऐसा बहुत ये दारू रुपये के नाचते, तो उस समय वो लोग कहते. 3 गुण आप किधर भी देख सकते, टाइमिंग एवरीवेयर यू कैन सी. Then, according to this Acharya says, recreation for yogi is walking. बस वो लोग एक बार ध्यान में गए मतलब कितना दिन जाएंगे, कितना महीने जाएंगे पता नहीं. So they can control the mind for long time. And too much work also not good for health. If someone thinks that if I work for my work at 8 hours, I have to work. So if I work overtime 2 hours extra, I will get 3,000 extra. है कि नहीं? कभी कभी हमको 2 घंटे एक्स्ट्रा जॉब करेंगे, कुछ ओटी मिलता है. तो उसको क्या होता है, हमारे कर्मा के अनुसार जो भी डिस्टाइन हुआ है, सम 8,000 only 15,000 you are distinct per month, for example. Now I will work 3,000 extra I will get. So what happened, that 18,000 you are getting, but the karma is only 15,000. Somehow or other the 3,000 will go away. Health issue, overtime किया, उसलिए आपको कुछ हेल्थ इश्यू है, मेडिसिन में वैसा चले जाए. So whatever is there, it is distinct. So we have to work in such a way that it should help our family and keep the body fit. उतना ही, कितना भी आप कमाओ हम संतुष्ट होने वाले नहीं, है कि नहीं? Last time we discussed right, in material world happiness means what? No one remember? Are we generally we are not getting happiness, but what we are getting in the material world? If someone has 10 lakhs per month salary, someone has 10,000 only. So what is the difference between them? 10,000 what he will get? One rented house, बहुत छोटा घर रहेगा, खाने के सिंपल रहेगा, फिर फैमिली का वो उनके पास एक साइकिल नहीं, एक छोटा बाइक रहेगा बस. बट 10 लाख मतलब उनके पास बड़ा बंगलो रहेगा, खाने के पूरा बहुत ऑपुलेंट रहेगा. सो बोथ आर सेम राइट. Like now we want to go to from Pune to Kolkata, we are catching a train.
but you have ticket of general ticket. He has sleeper ticket. He has AC. Okay, a single one tier, two tier, three tier, but some tier he has. So what is the difference between all of them? Comfort. Only comfort. Same way here also. You earn 10,000 also, 10 lakhs also. Only comfort is going to increase. But the sleeper जनरल बोग में थे वो भी कोलकाता पहुंचेंगे. एसी बोग में है वो भी पहुंचेंगे. That destination is same. You are also going to eat. He is also eating. You are also maintaining family. He is also maintaining. Only opulence. So how much you earn, you are not going to get happiness. You are going to get only comfort. Because it is for body comfort, not for soul. Whenever you give needs for soul, then you will get the real happiness. So one should work very intelligently, work for less time and more. Okay, now this difficulties of Astanga Yoga is over. We saw that. On top of it, after so much practicing of this Astanga Yoga, what the yogi is going to get is Siddhi. This Siddhi means some kind of power they will get. Ahima, Lahima, Prapti, some different powers. They can walk on sun rays. They can walk on water. They can fly on air. They can bring anything from anywhere. आपको क्या चाहिए? कश्मीर से apple चाहिए. They can bring. These are the mystical power they are going to get. So once what happened? There was one village. So one person in childhood only he went to practice yoga. And he practiced yoga very nicely. And he came after 50, 60 years. 60 years after that. So then he came and he introduced himself. I am that so and so person. I went to practice yoga. So I came back. So whole village came to see him. Hey, he's that he became a yogi. Baba ban gaya, inhone bada Baba. So everybody came. And they asked him, what you learned? This meaning, what do you know? What you can do now? He said, I can do some mystic thing. What is that? So he told, come behind me. He took him to the river. And then he told, see, now I am going to cross this river from this side to that side. So he went and he walked on the river. And he crossed. Everybody was seeing, my Lord is walking. And one old man, he walked from here to there and he came back. And one old man came. He said, this is not something big thing. Why it is not big thing? I can do. He said he removed 50 paise and he gave to that boatman. He took him and he came back. 50 paisa काम है इतना 50 साल से किया. So what he is trying to say is by Astanga Yoga, whatever you are trying to get, it is already achieved by modern science. Ship is there, you can walk. You want to fly in air, what is that? Aeroplane is there. You want to bring anything, mobile is there. Just type करो, order करो, आ जाएगा. क्या थोड़ा late होएगा, but आ जाएगा. Somehow same thing only. So Astanga Yoga इतना करने के बाद, इतना कठिन होने के बाद भी जो मिलने वाले वो पल ये बहुत आसान से हमें मिल रही. So now we are going to see Astanga Yoga perfection मतलब क्या है? When the yogi by practice of yoga disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga. So yoga मतलब main चीज क्या करना है? They have to control the mind. Their full focus is that only. Because the whatever problem we are getting is because of the mind. Like two people are there. In school, college you can see. एक फेल हो गया, दो लोग फेल हो गया, एक बिंदास घूमते रहते, मुझे मालूम है फेल हो गया. So he doesn't care. One person, I thought I studied well, मुझे क्यों फेल हो गया? उनको मन इतना विचलित हो जाएगा. Some do suicide also. I should come first, topper, but I became second. It's NIT, IIT, all is very famous. People will do suicide, commit suicide if they get less mark also. Because they cannot tolerate. But someone gets fail mark. वो एग्जाम भी गया भी नहीं रहे, बिंदास घूमते रहे. बस उनको कुछ मन में इतना प्रॉब्लम नहीं. But for him the mind doesn't allow. Became second. How you can show your face to your friends? So that dignity, prestige, this all people they will put inside. So this problem is with the mind. Generally problem is like someone is there, बहुत गर्म लग रहा है मुझे, बहुत परेशान हो जाते हैं, गर्मी लग रहा है. कुछ लोग ऐसे आराम से बैठ के रहते हैं. So because of the mind is not controlled,
एवरीवन कंसिडर सिंपल थिंग आल्सो ए प्रॉब्लम। अभी किसी को गाली दे रहे हैं, एक ने चुप रहेंगे, एक ने बहुत गुस्सा हो जाते कि झगड़ा भी करेंगे। बस इस माइंड इज नॉट कंट्रोल, मुझे एजिटेट हो जाते हैं, मुझे कैसे बोल सकते हैं ऐसा, मुझे कुत्ता बोल दिया है, आप कुत्ता नहीं है फिर आपको गुस्सा आ रहा है। सो जनरल पीपल, अदर पर्सन में थिंक दैट ठीक है वो क्या कुछ भी बोल दी जाने, मुझे मालूम नहीं क्या है। तो अदर पर्सन बिकॉज द माइंड डजंट अलाउ them. That's why the yogi fully focus on controlling the mind. So how they control the mind? That Ashtanga yoga, 8 types of process. योगा मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। दिस आर द 8 लेवल। यम नियम, डूस एंड डोंट्स। आसन, फिजिकल एक्सरसाइज। प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। प्रत्याहार, कंट्रोलिंग द सेंसेस एंड माइंड। धारणा, ध्यान, समाधि मीन्स फोकसिंग ऑन God. These are the why they are doing all these steps, then only they can focus on God. हमारे मन बहुत विचलित है, उस समय कुछ पढ़ाई करने के लिए देंगे, हम पढ़ाई कर सकते, कोई हमको गाली दे दिया, मन उसमें ऊपर ही रहेगा, पढ़ाई नहीं। सो मन थोड़ा शांति होने दो, बोल देना लोग शांति हो जाओ, बाद में बात करता हूँ मैं आपसे, अभी बात करेंगे आप मुझे गाली देंगे। बिकॉज जैसे द माइंड दे आर कंट्रोलिंग, देन दे फोकस ऑन गॉड। So what this mind does, 3 things it does: thinking, feeling, and willing. So thinking means you want to eat gulab jamun, you saw gulab jamun, so don't think. तो देखने तुरंत हमको लगता है अरे खाए इतना अच्छा लगेगा, you think first, it starts from mind only, ना तुरंत जाके हम नहीं खाएंगे, माइंड सोचते, then it feels, खाएंगे सॉफ्ट रहते, मीठा रहते, so वेरी मिल्की टेस्ट, सब कुछ वो फील करते हैं हम, मतलब मेंटल फीलिंग बोलते हैं इसको। दैन तुरंत अब खाना ही पड़ेगा, कितना पैसा है जाओ ले लो। सो दिस थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो द प्रॉब्लम इज थिंकिंग। हम कुछ गलती करने का पहले भी हम दारू पिएंगे, कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा क्या, दारू कैसे रहेगा, लोग हम देखते हैं। सो वी थिंक फर्स्ट, एनी बैड एक्टिविटीज और गुड एक्टिविटीज यू डू, फर्स्ट प्रोसेस थिंकिंग दैट हैपेंस इन माइंड। सो वी थिंक दारू पिएंगे क्या, नहीं पिएंगे क्या, पिएंगे कैसा लगेगा, फिर सोचते पहले, बाद में इफ आई ड्रिंक व्हाट आई विल डू, व्हाट आई विल फील, यू कैन फ्लोट इन। यार लगता है ना लोगों को, दारू पी लिया मतलब स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, सो लोगों को ऐसा ही लगता है। देन लेट अस ट्राई। सो दिस आर द माइंड एक्टिविटीज, इट इज गिवन इन भगवद गीता आल्सो। दिस इज द वर्स इन भगवद गीता 2.62 और 363। ध्यायते विषयान् पुंस संगतेषु उपजायते, संग संजायते काम, काम क्रोधात् जायते। First, the thinking, you will think something, I want to achieve it. Like, best example is woman. As soon as you see a girl, she is very beautiful. When thinks that, is very nice. What if I get married? Feeling. So उनका पूरा दिमाग में सब कुछ चलता है। You can able to relate now, right? सब हंस रहे हैं। Other example was not much related. So if I marry, I can do this. पूरा imagination चलता है. Then the willing will happen. So imagination में अच्छा अच्छा आते हैं, बट शादी के बाद क्या आएगा आपको मालूम है ना। मूवी में भी इसलिए आधा ही दिखाते, हीरो विल गो, बिफोर मैरिज तक दिखाते, वो लव सीन वो पूरा अच्छा रहते, बट शादी के बाद इतना ज्यादा दिखते नहीं, फिर मूवी फ्लॉप हो जाएगा। सो थिंकिंग, सो ध्यायतु, ध्यान करते बोलते ना ध्यान, सो उसको ध्यायतु। सो वंस यू थिंक देन यू बिकम अटैचमेंट, द मोर यू थिंक द मोर यू बिकम अटैच्ड। उसको संग, अटैचमेंट बढ़ता है। देन संगा से क्या होता है, थिंकिंग देन अटैचमेंट, आपका डिजायर बढ़ता है। आप खाना है गुलाब जामुन, ठीक है, और उसको सोचते सोचते रहेंगे ना, उसको इच्छा ही बढ़ता है, तब तक हम नहीं खाएंगे, सब बढ़ते जाते हैं, वो अटैचमेंट भी हो जाता है, कैसे भी खाना है लेना ही पड़ेगा। सो थिंकिंग देन अटैचमेंट एंड डिजायर। सो डिजायर से आप व्हाट इज आफ्टर दैट डिजायर, काम, क्रोध, क्रोध आ जाते हैं। If you fulfill the desire, then greed will increase. अब एक गुलाब जामुन ही मिला, फिर 2 मिला नहीं, फिर 3 मिला नहीं, अब मिला भी प्रॉब्लम है, नहीं मिला भी प्रॉब्लम है, मिल गया मतलब और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अभी नहीं मिला मतलब गुस्सा आ जाए, क्यों मुझे नहीं मिला, इधर तक आ गया नीचे गिर गया। सो दैट्स व्हाट क्रोध, क्रोध आ जाते हैं। तो थिंकिंग, अटैचमेंट, डिजायर एंड एंगर। सो उसके बाद क्या होगा वो भी दिया है,
क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. So from anger, our memory will lose. We lose the memory. In the sense, गुस्सा में आप देखते नहीं ना किसको मैं गाल रहा हूँ, किसका क्या कर रहा हूँ. तुरंत किसी को गाली दे देते हैं हम. माय लॉर्ड, ही इज माय टीचर, उनको मैं गाली दे दिया, क्योंकि हमारी मेमोरी भी नहीं, वो पूरा भूल जाते, दिमाग भी नहीं काम करते. किसी को गुस्सा में है ना, राजोगुण को उसमें, रजोगुण तमोगुण, दिमाग ठीक से काम नहीं करते. हमको जो मन को लग रहा है वो कुछ करते. सो फर्स्ट इज senses are there. Above sense, what is there? Mind. Above mind, intelligence. So these are the basics. So one should first control the senses. So control the senses. Why you are seeing gulab jamun, or why you are seeing the girl unnecessarily? बोल के देखते क्यों कर रहे हैं, उससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना. Why are you watching? So you control that. That's why yogis half close the eyes, not fully open or fully closed. Fully open means he cannot meditate only. देखते रहेंगे इधर क्या चल रहा है, वो चल रहा है. Fully closed मतलब सो जाएंगे. तो इसलिए half closed. और that problem starts from our senses only, because mind is there ना. Mind is like memory card. उसमें कुछ नहीं है मेमोरी. नया मेमोरी कार्ड में कुछ रहते डेटा, कुछ डेटा नहीं रहते. पर वो डेटा किधर से मिलता है माइंड को? इंद्रिय से ही मिलता है. आप कुछ देख रहे हैं, कुछ देख लिया, फिर माइंड में बैठ जाते हो, फिर वो माइंड छोड़ते नहीं आपको, उसको चाहिए. somehow you have to achieve it, so it troubles you. That's why you have to, instead of seeing some bad thing, people see ना in mobile some nonsense, porn movies, this that, वो देखने के बाद क्या होते, how I can enjoy now, उसको देखते देखते फिर क्या होते, रेप, ये वो होता है. That's why you should not, first thing is senses. We have to control the senses. Instead of seeing something in mobile, you can take darshan of Lord, वो spiritual हो जाते. Instead of hearing something bad, you can hear about Lord. So you give proper input, proper data आप दे दो. अब गलती डेटा दे हम लोग वायरस आ जाते, मेमोरी कार्ड में कभी भी वायरस आ जाता है, करप्ट हो जाते. वैसा हमारे मन भी बैड थिंग्स वी आर गिविंग, देन इट विल बिकम वायरस अटैक. वायरस होने के बाद देखा लैपटॉप में क्या होता है, तुरंत कुछ फोल्डर खुलता है, कुछ कुछ तो पेज खुलता है, कुछ देखा रहेंगे पता चलेगा. कंप्यूटर मेनू, सम फाइल्स विल बी डिलीटेड. So like this, our mind also corrupted, attacked by virus. So many this type of troubles will happen. So once you give proper input, mind also will take proper data, but it works properly. So you use all the senses for spiritual purpose. Take darshan, take prasadam from tongue, and hear about God, smell the flowers of the Lord, touch the feet of the Lord. These are the 5 senses activities you can do for God. In this way, what happened? Mind will be fresh, will not be troubled, and you will be happy. But generally people देंगे मन इतना प्रॉब्लम रहते हैं मन के अंदर, बट बाहर से लोग अच्छा हंसते हंसते बाहर कहते, पर मन में उनको कुछ इतना ये अच्छा इंप्रेशन नहीं है. You know this air hostess, how many of you traveled in aeroplane? Air hostess you see, so very sweetly they talk, please welcome. आप गाली देंगे भी वो गाली नहीं देना है आपको, चुपचाप सुनना है आपको, जो चाहिए उसका हेल्प करना है, मदद. वो लोग एक बात भी नहीं बात करेंगे आपको गाली देंगे, क्यों इतना लेट हो गया यार, फिर वो लोग बोले सारी हम गलती से कर दिया. वो देखा है ऐसा, इतना नम्रता हम सोच नहीं सकते. अंदर से उनको लगता है अरे दिया 3000 इतना परेशान कर रहे हैं हमको, अंदर से लगता है, बट बाहर से अच्छा अच्छा बात करते हैं. सो बिकॉज इंटरनल प्यूरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, नॉट एक्सटर्नल. बाहर से देखेंगे अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते, फ्रेश नहा के रहते, बट अंदर से वो इतना अच्छा नहीं. So yoga means that internal purification is very important, which is that mind. If mind is not purified, then from mind it comes to outside. That feeling will happen in senses. अंदर पहले घुसते, अंदर से बाहर आते हैं. जो अंदर से बाहर आ गया बोलते ना, अंदर इतना दिन अब रखा है उसका भी बाहर आ गया. So that's a proper input we should give. So that's what yoga means. One should not think in heart also, mind also something bad. वो बहुत मुश्किल है. कितने लोग हम गाली देते हैं अंदर से, या मैनेजर आ गया परेशान करे सबको, पर मन के, बट आप बाहर हम बोल दिखाते नहीं, जॉब चले जाएगा, हम कोई बोलेंगे कुछ बोलेंगे. So if someone mind is controlled, then there will not be any desire. If there is no desire, he doesn't need to worry about anything. Because of desire, we have to
we will become attached. Like you want to buy one BMW car, how much you have to struggle? BMW car is too costly, so we have to work so hard, so hard. Then we earn money. Now I bought new car. So after getting, you are happy. Where to park it? While taking, बहुत आराम से सिग्नल में एक थैला वाला क्या ऐसा एक कोड लाइन डाल के चले जाएंगे, स्क्रैच बन गए, आपको लगेगा इधर कुछ ब्लेड लेके although you are not the car but you get paid, right? इतना लाखों कार करोड़ का some I don't know how much car prices, it may be some crore rupees, ये थैला वाला है कि ऐसा पूरा लाइन लगा के नहीं, someone came and गाड़ी से आके उसको धक्का मार दिया, एक क्या हो गया, अंदर चले गया, कैसा लगता है हमको? That after that also we are not happy. We cannot keep it inside also. We have to show also others. Like I have BMW. Someone should see. My God. बोलते ना वो क्या ऐड आते, नेबर्स प्राइड ऐसा बोल के आते, मूवी टीवी के लिए आते, ओनिडा के कुछ तो एक टीवी के लिए आते. Neighbors should feel jealousy. Oh, he bought such a wonderful thing. The others should feel he has BMW car. हमको थोड़ा अच्छा लगता है. So we cannot keep it inside also. So here everything is problem only. Even before you buy, you have that hankering. I don't have BMW. After you buy, you have to protect it. अरे कुछ नहीं होना चाहिए. अगर आपको चले गया वो, कोई चोरी कर दिया, उस समय भी प्रॉब्लम, चले गया. So in all the cases you will not be happy because the desire. So one should control the desire. If mind is controlled, आप चपाती और थोड़ा दाल बस हम खुश हैं. और माइंड इज नॉट कंट्रोल, जो भी दो वो खुश नहीं रहेंगे. चपाती के साथ पनीर भी दो, उसको ज्यादा कुछ भी दो, घी चपाती बटर चपाती, फिर भी क्या है अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, जल गया ये. बिकॉज द डिजायर, यू कैन नॉट सेटिस्फाई द डिजायर. वी हैव plenty of desire. So if somebody's mind is controlled, the yogi they control the mind. After they control, they are connected with God. Yoga matlab connection. The meaning of yoga is connecting or linking. Connecting with what? Yeah, connecting with the God. So how to connect? That is a process, the Astanga. So how a yogi's mind should be, this verse is explained. As a lamp in a windless place doesn't waver. So the transcendentalist whose mind is controlled remain always steady in his meditation on the transcendental self. Lamp, you know, right? Candle light you see. अभी हवा आएगा वो ऐसा ऐसा ऐसा, कभी कभी वो बंद भी हो जाते. But if there is no air, the lamp, what do you say that? Fire, that candle light, it will not waver, it will be straight. Like this, yogi's mind also. He goes for meditation, he once closes the eyes and he meditates on God. His mind doesn't go anywhere. हमको भी ऐसा ही रहता है ना, बुक लेके बैठते, बुक देखते, पढ़ाई भी करते, बट हमारा मन इधर छोड़ के दूसरे सब जगह में जाके आते. 1 घंटे हो गया, ये क्वेश्चन भी अंदर नहीं गई, क्योंकि माइंड बहुत डिस्टर्ब. So the yogi's mind is not like that. His mind is fully controlled. You might have heard, right? Even Vivekananda also. He goes to library, he once sees, and then he will close and goes in. Same thing happened with Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj also. He is Prabhupada's guru. He also read once, that's it. मन में बैठ जाते, कभी भी पूछो, he will give answer. Because such a attention. Why you are forgetting? Because you are not attentive. अभी क्लास में आपको कुछ चीज अच्छा ध्यान किया रहेगा, वो आपको भूलते ही नहीं कभी भी. So the more you are attentive, the things will not go away from your mind. So to be attentive, one's mind should be controlled. So their mind is fully controlled. They can study means now they can study. If they want to sleep means they can sleep. They can tell the body what should be done. Now the mind is telling us what you should do. जाओ इधर जाके वड़ा पाव खाओ, जाओ इधर जाओ, सो जाएंगे, मूवी जाएंगे, दारू पी लो, ये करो वो करो. माइंड कितना बोलते फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसका नहीं मन क्या करना है. बच्चे का दो कुछ भी दो, उसको संतुष्ट नहीं होगा. छोटा कार पूछेगा, कार चाहिए, कार रोएंगे रोएंगे, कार देखेंगे खेलेंगे, थोड़ा समय के बाद ये नहीं चाहिए, बड़ा कार चाहिए, वो देंगे, उसमें भी संतुष्ट नहीं, उसके बड़ा कुछ पूछेंगे. तो हमारे डिसाइड भी ऐसा ही था ना, बच्चपन में we'll play with a small car, then we bought tricycle,
then cycle, then bike, car. Our desire is going on. उसके बाद बेस्ट कार, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट बाय एयरप्लेन ऑन. सो हमारे लेवल में कुछ तो बेस्ट 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 बेस्ट, तो हमको लगता है ये मिलेगा संतुष्ट मिल जाएगा, अभी संतुष्ट नहीं है, उसके बाद ये मिलेगा संतुष्ट हो जाएगा. सो व्हेन द माइंड विल बिकम हैप्पी, यू नो, व्हेन विल यू गिव हिम टू कृष्णा, तब तक वो मन कृष्णा के पास नहीं आएगा, वो घूमते ही रहेगा इधर उधर, ये वो कुछ भी दो उसको संतुष्ट नहीं होगा. तो उसका उदाहरण शास्त्र में भी दिया है, मछली है ना, मछली को पानी से निकाल देते, निकाल के उसको एक BMW कार दो, एक ब्लैंक चेक दो, आप कितना पैसा चाहे ले लो, एक बंगलो दो, वो खुश होएगा. क्यों? पानी से भरा, उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए. इसलिए आत्मा को ये चीज पर नहीं चाहिए, आत्मा को चाहिए भगवान ही. सो अनलेस अंटिल यू डोंट गिव लॉट, दैट्स satisfaction you won't get. Okay, we'll complete this one. Okay, this verse is discuss about absorption. So absorption means the mind is not disturbed by anything. हमको ऐसा करते रहेंगे, पढ़ाई करते हैं, कुछ छोटा म्यूजिक आएगा भी, हम क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये बंद कर देंगे, फिर देखेंगे आधा घंटे चले गए यार. सो हमको बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, बट उनको कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होते. Lord Shiva was once meditating. His wife come and disturb him. He did not understand him. She tried to disturb him in so many ways. He did not disturb. अभी मूवी में देखा है, कुछ योगी योगी मेडिटेट करते हैं, इंद्र ने आते, सब सारा चीज कहते हैं, लोग खोलते भी नहीं यार, पता नहीं चलता है एक्चुअली. ऐसा नहीं इंद्र आ गया अभी खोलना नहीं, खोलेंगे. किसको बेचते वो? हाँ, अप्सरास, वेरी डेंजरस, डेंजरस वेपन. दूसरा वेपन भी टैंकर ला रही है, वो लेके आएंगे भी प्रॉब्लम नहीं, बट ये वुमन ब्यूटीफुल, अप्सरास आर वेरी ब्यूटीफुल वुमन. दे आर फ्रॉम स्वर्ग, हेवन. So if you compare that woman with our world woman, they are like cockroach. So how beautiful they are, cannot imagine. So if someone sees her, no need to say. योगी पूरा छोड़ दो अभी, कुछ जरूरत नहीं. So they are that much, they don't disturb. उनको मालूम इससे कुछ संतुष्ट होने वाले नहीं. So the yogi has to purify everything. As I told you, thinking, feeling, willing. So like this, the yogi first he has to purify the thoughts. Not thoughts, first action. What action you are performing? The three things are there. One can do sinful activity, thinking, गलती सोचते किसी के ऊपर, और speech, गाली देते किसी को, डांटते. Then action, किसी को मारते, चोरी करते, और कुछ गलती चीज करते वो. So these three things one has to purify. What are the three things? Who can say? Yeah, the recavity. Thinking, speech, and action. So one, it should be pure. So we cannot go to forest. We cannot do yoga. We are pressing the nose. Ramdev Baba बोलते हैं ना, इधर से ले लो, इधर से दो लो. This all we cannot do. Going to forest, of course, to keep health something we can do, little bit, but leaving home, family, friends, everything, it is not possible. That's why the Astanga yoga is very difficult to practice in Kali Yuga, especially. That's why Bhakti yoga is good. So in Bhakti yoga, how we can purify everything? One can speak about Lord. The action, do so many services. Like in Janmashtami, so many devotees came. They did so many services. Some did service in kitchen, some did in stall, preaching service they did. Like this, so that is action. So then thinking, think about God. Like you are hearing some pastime, you can try to think about that. So best way of thinking is chanting. If you chant, then you have to hear that mantra. To hear, your mind should be focused on that. That's why best way to control mind is chanting. That's why chanting is prescribed. So next chapter onwards, every class we will chant. Because this is Ashtanga yoga going. Next is Bhakti yoga. Bhagavad Gita is talking about 3 yoga, you know, right? Actually 4 yoga. Who knows? Karma yoga. Karma yoga, Ashtanga yoga is going. Then Bhakti yoga will come. Next 6th chapter is Jnana yoga. So easiest yoga is Bhakti yoga, which is very easiest.
Anyone can practice. Even child also can practice. Prabhupada says. Whenever there is kirtan, the child is dancing, you know. ये चाइल्ड जाके योगा करो मतलब उसको नहीं होएगा वो पूरा, पर कुछ करता डांस करेंगे वो भी डांस करेंगे. डांसिंग ऑल्सो है भक्ति. जस्ट जम्प्स दे वेरी नाइस, दे बिकम वेरी हैप्पी. आप देख सकते 7 बजे अभी आरती समय नहीं, सुबह आके संडे आके देखो कितने बच्चे लोग आगे नाचते खेलते. उसको कुछ नहीं मालूम, बात करने के लिए भी नहीं आते, चलने के लिए भी ठीक से नहीं आते, फिर भी वो लोग नाचते. ये वो देख के बहुत खुश हो जाते. तो भक्ति इज वेरी इजी. जस्ट chant the holy name of God. Tukaram Maharaj also given very easiest process. This one he gave. Hari Mukhe Mana, Hari Mukhe Mana. Just tell the name of Lord Hari. आप कुछ दूसरा कुछ करने के लिए जरूरत नहीं, आप जो कर रहे हो वो करो, भगवान का नाम ले लो उसके साथ बस. So that's why this example is given, wind and flame. This flame is like mind. Wind is distraction, desire. वो आए थे हम पढ़ाई करते रहते, अचानक मन में विचार आ जाते, थोड़ा जाके आइसक्रीम खा के आएंगे. कुछ बड़े लोग मतलब जाके स्मोकिंग करके आएंगे. बहुत टेंशन हो गया अभी, एग्जाम के लिए 2 ही घंटे है, अभी मैं बुक मिला मुझे, उस समय बुक ढूंढते भी किधर रखा हूँ. So one whose mind is not disturbed, that stage is samadhi. तो योगी लोग उसको समाधि स्टेज बोलते. वो लोग कंसंट्रेशन करने के लिए चालू करते, they are fully focused on God. Mind doesn't go anywhere, so they get that real happiness there. सब सोचते मुझे मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, सब लेने में मुझे संतुष्ट मिलता है. बट योगी लोग देखेंगे सब छोड़ के चले जाते, उधर संतुष्ट, रियल हैप्पीनेस यू विल गेट देयर ओनली. द मोर यू हैव, द मोर यू आर troubled, the more you are disturbed. One rich person was there, such a big house he had, and in his house he had so much gold. So before sleeping, one locker, second locker, third locker, then security. So many locks he put, then he kept the key and he slept. While sleeping, आवाज आएगा, कौन आ रहा है? तो उन्होंने डर गया क्या करना है अभी, लेकिन इधर से कैमरे से देख रहे हैं उधर कुछ आवाज नहीं. देन ही थॉट हिज माइंड ओनली इज ट्रबलिंग. मन में लगता है ना कोई तो है उधर. फिर जाके कोई तो आया, जाके देखे, फिर सब खोल के देखा सब गोल्ड है, फिर बंद करो, फिर बंद करके सोया. सोने के बाद तुरंत देखा चाबी नहीं है, फिर रखा, फिर जाके इधर बहुत विचलित हो जाते हैं. तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग हियर ही केप्ट हियर. सो लाइक दिस माइंड ट्रबल्स. So this thing is not going to happen. The more you grab, the more you suffer here. Nothing is going to give happiness here. That's why people, they have everything. One who has so many things, they are so much disturbed. मेरे पास सब कुछ है, उनका लगता है सब कुछ है, फिर क्यों संतुष्ट नहीं मिल रहा है. अभी हमारे पास कुछ नहीं है, पैसा मिलेगा संतुष्ट मिलेगा बोल के हम पैसा के लिए सब कुछ करते हैं. हमारे वही एक ही एम है, वही है. बट किसी को बस सब है, पैसा भी है, फिर भी उनको संतुष्ट नहीं, वो बहुत दुख में चले जाते हैं. So that's why bhakti is the very easiest process which can purify all our desires just by chanting. One should chant. So from one round one can start. How many of you know that chanting you've seen or you did? किए आप लोग पूरा अच्छा है. If you want you can come for morning program. So every day we do this meditation, japa meditation we call. From 5:20 to 7:30 we do this meditation. Those who are interested, they can come and they can join. 7 o'clock also you can come. If 5:30 is very difficult, तो जप कर सकते. वो हम सिखाएंगे आपको, माला भी देंगे कैसे जप करने. तो वो करने से आपको वो मन शांति हो जाती. इसलिए मंत्रा बोलते ना, मंत्रा, मन को सारे इकट्ठा से बाहर निकालते. त्र मतलब डिलीवरी, मन मतलब माइंड, डिलीवरिंग द माइंड, दैट इज मंत्रा. मंदिर, मंदिर भी बोलते हैं इसको. मन मतलब माइंड. इसलिए मंदिर आने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है हमको. कभी कभी बोलते हैं ना बहुत परेशान हो रहे, मंदिर जाके आता हूँ. आजकल लिकर सब हो जाते हैं, बहुत परेशान में लिकर सब हो जाए और ज्यादा वो धूप को बढ़ाते हैं. So the chanting is the foremost thing, which is easy, everyone can practice. Okay, we'll stop here. Everyone of you put attendance. How many? 25. Okay, so you can go for prasadam down.
अब लेके जा सकते हो। किसी को कुछ प्रश्न है पूछ सकते, प्रश्न नहीं बोलो, प्रसादम के लिए जा सकते।